reproduction. Reproductive events in human. Reproductive events in humans. Reproductive events in human. Reproductive events in human. Reproductive events in human. पहला क्या है? Gametogenesis. 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 Insemination. Insemination. Gametogenesis. Insemination. Fertilization. Fertilization. Gametogenesis. Insemination. Fertilization. इसके बाद क्या है? Implantation. Implantation. Gestation. Gestation. Participation. Observation. ठीक है. The formation of gametes take place in reproductive organs. Male gametes, spermatogenesis, spermatozoons or female gamete, ovum. Male gamete, spermatozoons, female gamete, ovum. Male gamete, spermatozoons, female gametes, ovum. Male gamete, spermatozoons, female gametes, ovum. Male gamete, spermatozoons, spermatozoon, female gamete, ovum. Male gamete, primary sex organ, secondary sex organ, accessory or external sex character. Male primary and secondary sex organ, male and female. मेल में कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं? मेल में होते हैं केवल टेस्टिस. मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस. ठीक है. और फीमेल में ओवरी. मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस एंड पीनस. एपिडिडाइमिस एंड पीनस. एपिडिडाइमिस एंड पीनस. Epididymis and penis. Epididymis and penis. Epididymis and penis. और accessory और external sex character, low pitch, voice beard, broad shoulder, narrow hips. Broad shoulder, narrow hips. Broad shoulder, narrow hips. Broad shoulder, narrow hips. Male reproductive system. 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 Male reproductive system में क्या क्या है तुम्हारा? मेल reproductive system is located in pelvis region. Male reproductive location pelvis region. 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 The male reproductive system is located in the pelvis region. Included pair of testes. Included pair of testes. Location मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है? pelvis region. Pelvis region. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
accessory ducts, accessory ducts, gland and gland and external genitalia. External genitalia. Accessory ducts, gland, external genitalia. Accessory ducts, glands, external genitalia. Accessory ducts, gland, external genitalia. Accessory ducts, accessory ducts, accessory ducts, gland, external genitalia. In adult, each testis is oval in shape with length about 5 to width टेस्टिस शेप कैसा है ओवल टेस्टिस का शेप कैसा है ओवल टेस्टिस का शेप कैसा है ओवल टेस्टिस का शेप कैसा है ओवल ठीक है और उसकी लेंथ 5 to 4 to 5 सेंटीमीटर 4 to 5 सेंटीमीटर 4 to 5 सेंटीमीटर शेप ओवल टेस्टिस का शेप ओवल है लेंथ 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर width 2 to 3 centimeter 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 टेस्टिस ओवल शेप कैसा ओवल है और लेंथ कितनी है 5 to 4 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 2 to 3 सेंटीमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर ठीक है situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. टेस्टिस के बाहर situated outside the abdominal cavity situated outside the abdominal cavity situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. एक पाउच के scrotum के कंसिस्ट बनता कैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने 250 कंपार्टमेंट ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिकुलर
250 कंपार्टमेंट होते हैं। हाईली कॉइल्ड, ठीक है। अब आता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस इतनी चीज़ों से मिलकर बन होता है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स, interstitial cells or Leydig cells, other immunologically potent cells, phagocytic cells, small blood vessel, small blood vessels, 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 interstitial cells or Leydig cells or Leydig cells, interstitial cells and Leydig cells, androgen, other immunological component cells, phagocytic cells, और तीसरा क्या है phagocytic cells secrete testicular hormones, androgen, Leydig cells क्या secrete करता है, testicular hormone secrete करता है, Leydig cell क्या secrete करता है, testicular हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे एंड्रोजन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। पहले एंड्रोजन कहते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी outside the testis is situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, ठीक है। टेस्टिस किससे बना होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल से बना होता है, जिसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो भी दो चीज़ों से बना होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि Leydig सेल्स, और तीसरा क्या होता है इसमें, फैगोसाइटिक सेल्स। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, और जो कि हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, ठीक है। अब स्मॉल ब्लड वेसल्स, Leydig cells, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या चीज़ होती है, इंटर स्पेस में तीन चीज़ें होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल,
small blood vessels, small blood vessels, interstitial cells or Leydig cells, Leydig cells, और तीसरी क्या होती है फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या चीज़ होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं तुम्हारी, इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लैक्टिक सेल्स होती हैं, और फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, और जो लेडिक सेल होती है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, जो लेडिक सेल होती है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, लेडिक सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, लेडिक सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस एंड्रोजन, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं, किसमें ईच कंपार्टमेंट में, ठीक है। और इन ईच लोब्यूल हाईली कॉइल्ड, ये कैसे होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया म्यूसिस होती है इसमें, और स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाथवे टू ट्रांसफर, सेमिनिफेरस pathway of transport of sperm, seminiferous tubule, seminiferous tubule, red testis, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens,
vasa difference. Epididymis with vasa difference. Sperm achieve maturity and motility in epididymis. अच्छा, sperm achieve sperm achieve sperm achieve maturity and mortality. In epididymis. In epididymis, vasa difference receive as a duct from semivesical and open into urethra as ejaculatory duct. Vasa difference receive a duct from ejaculatory duct. The urethra originates from the urinary bladder, extend through the penis in external opening called urethral meatus. Penis is made up of special tissues that help in erection of the penis to facilitate insemination. Penis is made up of special tissues help in erection. The penis is facilitate insemination. Penis is made up of special tissues that help in erection of the penis to facilitate insemination. Male sex ducts. Male accessory ducts play an important role. Male accessory ducts play an important role transfer and temporary storage of sperm. Rat is inside the testes. Rat testis inside the vasa potential leaving the testes. Testes inside the testes. Rat testis inside the testes. Vasa potential leaving 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 the testes. Epididymis outside of testes. Epididymis outside of the testes. Epididymis outside of the testes. Epididymis outside of the testes. Vasa difference leaving the scrotal sacs and enter into abdominal cavity. Vasa difference leaving the scrotal cells and into the abdominal cavity. The temperature in scrotum is 2 to 2.5 degrees Celsius. Temperature of scrotum 2 to 2.5 degrees Celsius. Temperature of scrotum is 2 to 2.5 degrees Celsius. Temperature of scrotum is 2 to 2.5 degrees Celsius. Temperature of scrotum is 2 to 2.5 degrees Celsius. Temperature of scrotum is 2 to 2.5 degrees Celsius. Temperature of abdominal cavity because maturation of sperm need low temperature. Temperature of abdominal cavity because maturation of sperm needs low temperature. Temperature of abdominal cavity because maturation
of sperm need low temperature. Male accessory gland, 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 male accessory gland. These glands secrete fluid enter the urethra. These glands, accessory glands, secrete fluids. Accessory glands secrete accessory glands secrete fluids that enter the urethra, accessory gland secrete the fluid that enter the urethra. Accessory gland secrete the fluid that enter the urethra. Accessory gland secrete the fluid that enter the urethra. Accessory gland secrete the fluid that enter the urethra. Male accessory gland: seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland, focal gland. Seminal vesicle or prostate, seminal vesicle, prostate, seminal vesicle, prostate or bulbourethral gland. Seminal plasma contain fructose, prostaglandin, citric acid, calcium and certain enzymes Bulbourethral gland or focal gland also help in lubrication of penis. The fructose present in the seminal fluid is the sucrose of energy of the spermatozoons. The fructose present in the seminal fluid. The fructose is present in the seminal fluid. The fructose present in the seminal fluid. The fructose present in the seminal fluid is the source of energy for the spermatozoons. Is the source of energy of the spermatozoons. Is the source of energy of spermatozoons. Is the source of energy of the spermatozoon. Interstitial interstitial cells secrete hormones to inhibit androgen, thyroxine, progesterone, androgen. Sperm production take place seminiferous tube.
Vasa differential exists between seminiferous and reed testis, epididymis and vasa differential. Vasa differential exists in between seminiferous and reed testis, epididymis and vasa differential, urethra and ejaculatory testis. External opening of the penis is called urethral meatus. Urethral meatus. The enlarged end of the penis is called foreskin urethral meatus or glans penis urethral meatus. The duct which carries sperm from testis to epididymis. Vasa differential. Seminiferous tubule. Bulbourethral gland help in the lubrication of penis, stimulation of sperm activity, help in the secretion of enzyme, maturation of sperm, help in secretion of enzyme, stimulation of sperm cavity. Prostate gland is present in seminiferous tubule, side of bulbourethral gland, bulbourethral gland, below seminal vesicle, below seminiferous tubule, side of bulbourethral gland. Prostate gland is present in the secretion of male accessory gland content. Trace the correct path of sperm from the role of leading cells of testes, provide nourishment, provide motility to sperm, bring the maturation of sperm, synthesis testosterone hormone. In human, the testes occur scrotal sacs outside the abdominal cavity because of the region outside the seminiferous tubule called none of these. The epididymis leads to vast difference that ascend to the abdomen. If the epididymis is not present, then what will happen? If the epididymis is not present, that what will happen? Sperm cycle will become short. Sperm will early close. The functional maturation of sperm will the quick sperm will be incapable for fertilization. In human, the unpaired male reproductive structure is
The sperm undergoes psychological maturation, acquire increased motility and fertilizing capacity in fertilizing capacity किसमें क्या डायमेंशन में होती है. If for some reason the vasa transfer into the human reproductive system gets blocked, the gamete will not be transferred from गलत, 6 गलत, 7 गलत, 8